Structural engineer is one, you can say he's like an orthopedic surgeon who designs the bone structure of your building. Foundation is a very crucial part of any house. जब आप घर बनाते हो, आपका ड्रीम होम बनाते हो, तो उसका फाउंडेशन एकदम सॉलिड होना चाहिए। আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটো কেৱল দেখিবলৈহে ধুনীয়া হলে নহব, লগতে তাৰ ফাউণ্ডেশ্যন অৰ্থাৎ ভেটিটোও মজবুত হোৱাটো নিতান্তই আৱশ্যক। যিকোনো নিৰ্মাণ কাৰ্যৰে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশটো হ'ল তাৰ ফাউণ্ডেশ্যন। ঘৰৰ ভেটিটোৰ সৈতে কৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ এৰাধৰাই ভৱিষ্যতে গৈ বিৰাট সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ধৰি লওক কোনো এটা ঘৰ যদি দুৰ্বল ভেটিত সজা হয়, তেন্তে সেইটো ধুনীয়া হয়তো হ'ব পাৰে, কিন্তু তাক মজবুত বুলি ক'ব পৰা নাযাব। আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ সবাতোকৈ বিশেষ অংশ ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিষয়ে বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰিম। আমি আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আমাৰ বিশেষ পদক্ষেপ নিউ ভোকো প্ৰেজেণ্টছ ঘৰ সাজক নিজৰ আ নিউজ 18 ইনিচিয়েটিভ, যি আপোনাৰ ঘৰৰ ভেটিটোক মজবুত কৰি তুলিবলৈ আপোনাক সহায় কৰিব। যিদৰে ভাল সংস্কাৰৰ বাবে ল'ৰালি কালত আমাক বয়োবৃদ্ধজনে দিয়া শিক্ষাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে, সেইদৰেই যিকোনো ঘৰ এটাৰ ভেটিয়ে তাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰে। আৰু ইয়াত আপোনাক আমি আৰু আমাৰ ৰিয়েল এষ্টেট ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ সৈতে জড়িত খ্যাতনামা এক্সপাৰ্টছে আপোনাৰ সেই সপোনৰ ঘৰটোৰ ভৱিষ্যত উন্নত কৰি তোলাৰ বাবে সঠিক পৰামৰ্শ আগবঢ়াম। ঘৰটো হ'ল এনে এটা সম্পত্তি যি পুৰুষ ধৰি আপোনাৰ লগতে থাকে। সেয়ে ঘৰটো মজবুত কৰি ৰখা আটাইতকৈ জৰুৰী কথা। ইয়াৰ ভেটিটোৰ প্ৰাথমিক উদ্দেশ্য হ'ল ঘৰটোলৈ স্থিৰতা প্ৰদান কৰা আৰু যিকোনো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ অৰ্থাৎ ঘূৰ্ণীবতাহ, ধুমুহা, ভূমিকম্প আদিৰ পৰা বচাই ৰখা। Foundation is a very important part of your entire structure, which eventually has been designed by structural consultant. And once the foundation is laid, then the level comes where the plinth comes. So basically plinth is something which actually defines your construction area, the built-up area. Foundation is a very crucial part of any house. जब आप घर बनाते हो, आपका ड्रीम होम बनाते हो, तो उसका फाउंडेशन एकदम सॉलिड होना चाहिए। फॉर दिस यू नीड टू नो आपके सॉइल स्ट्रैटा क्या टाइप का है। सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ये जानना बहुत जरूरी रहता है, जिसका रिपोर्ट आपको टेस्टिंग लैब से मिलता है। जो सॉइल के ऊपर आप आपका घर बना रहे हो, वेदर इट इज हैविंग इनफ स्ट्रेंथ टू टेक द लोड ऑफ एंटायर योर हाउस। अगर सॉइल स्ट्रैटा एकदम लूज हो तो टॉपल डाउन के चांसेस होते हैं। सो सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बहुत जरूरी है जानना। Structural engineer is one, you can say he's like an orthopedic surgeon who designs the bone structure of your building, which keeps the whole structure upright, which keeps it stable, and it ensures that it remains within serviceable limits. So the structural engineer is the person responsible for the stability of the structure. All the foundations are entirely depend upon the geology in that particular area. We have in India lots of places where it's totally marshy, or we have deserts where it's totally sandy. So generally, if I'm trying to build somewhere in a marshy area, then I'll require elephant's legs. But if I'm trying to build in a desert where it's all sand, then I would require camel's legs. So the area of our foundation and the type of foundation varies depending upon the geology and what strata is available on your site. Generally, the reaction that you get from the ground depends upon the soil that is there. A marshy area would not give you much reaction, but still that higher footprint would give you more area, which would give you more reaction, which will help in the structure standing uprightly. But the reverse way, when you put a heavier weight in sand, the sand would tend to shift out. So you will not get that adequate reaction. So there you require a smaller area, which will give you that same reaction. So this concept of area and the size will help you in designing your foundation. আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটো সজাৰ সময়ত আপুনি কিছুমান প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু যেতিয়া কথাটো হ'ল ফাউণ্ডেশ্যনৰ অৰ্থাৎ ঘৰৰ ভেটিটোৰ, তেতিয়া প্ৰথমৰ পৰা লৈ শেষলৈকে সতৰ্কতাৰে কাম কৰাটোতহে বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয় থাকিব।
any region, before you begin the work, it is very important to ensure the region-wise characteristics of that particular region. There are three important parameters when you are building your house. First is the seismic data in your region. Next is the wind, the loading that you need to consider due to wind. And third is the soil classification in your location. Once the plinth is ready, an architect go and verifies the plinth checking. Plinth checking is basically a measurement of the entire construction area on the ground floor. So once we verify it, we approve it, then the contractor can take it forward for the further execution. Once the measurement of the plinth is confirmed, then contractor is good to go on the further levels. Plinth checking is something very important because that verifies the measurements on site. ग्राउंड स्टोरीड या ग्राउंड प्लस 2 स्टोरीड तक का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके लिए एक्सकैवेशन आपको 6 फीट तक करना जरूरी होता है, जिसके कारण आपके सारे जो फाउंडेशंस जो रहते हैं घर के वो ग्राउंड के नीचे कास्ट किए जाते हैं। यूजुअली 2 से 3 माले तक की बिल्डिंग के लिए आपको 6 से 8 फीट एक्सकैवेट करना पड़ता है। এটা নতুন ঘৰৰ সমস্ত দিশতে ঘৰটোৰ গাঁথনিৰ বৃহৎ প্ৰভাৱ পৰে। অধিকাংশ লোকেই নিজৰ ঘৰটোৰ গঠন প্ৰণালী বা ষ্ট্ৰাকচাৰ বা গাঁথনিৰ বিষয়ে বৰ বেছিকৈ নাভাবে, আৰু সেয়ে এই প্ৰক্ৰিয়াত কৰা একেবাৰে সামান্য ভুল এটাও আপোনাৰ সমস্যাৰ কাৰণ হৈ পৰিব পাৰে। Now your house, if you are intending to build a pakka house, could be built of 3 types. First is a RCC house. RCC is reinforced cement concrete. As the name suggests, there is reinforcement in it which is made out of steel. Now this particular type of a house will be very good in an earthquake scenario, in a scenario where there is tornadoes. So the government is also pushing the country to build such kind of houses. The other ways to do it is to build a steel structure. It's a little expensive, but however it can be built. The third way to do this is to build a load-bearing structure. So load-bearing structure is a structure that is traditionally built out of, say, bricks or stones, and then you reinforce that particular structure at the edges on top of your windows, which is called as lintel levels, with RCC members, so that again such a house is better in any kind of natural disaster scenarios. RCC होने के बाद आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल्स का ब्रिक वर्क करना पड़ता है, और ब्रिक वर्क का क्यूरिंग पीरियड खत्म हो जाने के बाद ही आपको प्लास्टरिंग करना अलाउड है। क्यूरिंग मींस कोई भी जब अपना ड्रीम होम बनाता है, सीमेंट, स्टील और उसके साथ में वाटरिंग करना स्ट्रक्चर को सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्रूशियल एक्टिविटी है। जितना आप उसको अच्छी तरह से पानी मारोगे, जिसे हम क्यूरिंग बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। सो वाटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एक्टिविटी इन एनी कंस्ट्रक्शन। और इसके लिए जैसे कॉलम्स रहते हैं तो वर्टिकल सरफेस रहता है, तो उसको गनी बैग्स बांध के उसके ऊपर पानी मारना, सो दैट इट विल बी प्रॉपरली क्यूर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। स्लैब कास्ट होने के बाद हम उसे पॉन्डिंग करते हैं, जिसके ऊपर कम से कम 15 दिन के लिए पानी रखते हैं। देन ब्रिक वर्क होने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन का क्यूरिंग पीरियड इज इसेंशियल, और उसी के बाद ही प्लास्टरिंग चालू कर सकते हैं। যিদৰে প্ৰতিটো ঘৰেই হ'ল অনন্য, সেইদৰেই প্ৰতিটো ঘৰৰে ভেটিও হ'ল ভিন্ন। এই পাৰ্থক্য নিৰ্ভৰশীল হ'ব আপোনাৰ গাঁথনিৰ কামৰ বাবে যি যি আৱশ্যকতা আছে তাৰ ওপৰত। When it comes to forms of construction, you've got a lot of similarities in block work and brickwork, where the materials are the key difference. And then Maiwan construction is a type of construction called slip-from construction, which really helps in the construction of mass housing and buildings where you need to go really tall with a uniform size of your column. Let me use these building blocks to show you a little bit of the example. When you're building your house or your apartment or the internal walls of your apartment or the walls, you tend to use bricks which are sort of stacked up as modules, and you can vertically take them up to build the wall design of your project. These
walls can be loosely broken down into two categories. You've got load-bearing walls and non-load-bearing walls. Load-bearing walls are the walls which are taking the structural weight, which are taking the weight of your roof essentially, for your house. When it comes to an apartment building, the load-bearing wall is taking the weight of the upper level or the upper apartment as well, and the ceiling. As a designer, when you're choosing a style of construction, it really depends on the scale or the size of your project. If you're building a simple standalone bungalow, you don't need to explore My1 construction because brickwork and blockwork can very much sort of like suffice your requirements. Assam, generally the geology is such that foundation strata is available. But because of the terrain, you will find that there are issues in the depth of the foundation that is available. For example, in one particular plot, it could happen that my first column gives a foundation over here, but the next column would find the strata is available here. The next column would be somewhere here. So you have to ensure that all these are cast and again interconnected with each other at those respective levels. So that will help in the stability of your structure. When you are thinking of Bengal and I want to dig, so we have to dig more because my strata is lower than expected, and I start digging there, then to retain those pits, what we call as stability of slopes, when I am excavating something, we find that the adjacent soil also keeps falling. So the size of the pit keeps increasing. Again, Bengal is extremely waterlogged. You end up spending a lot of time and effort in dewatering your place. So it is not possible to dig or dig deep and do these foundations. So in this case, we would prefer going down maybe 10 meters, 12 meters, and we use a concept which we call as friction pile. So those piles will resist the loads depending upon the length and the diameter of those. So we can choose an adequate diameter and choose an adequate length and get the required strength for your foundation. In a place like Orissa, you will have to go in for a deep foundation. Though it is coastal, it is also mostly silty or sandy, and hard strata, as we call it, is not available at general near the ground levels or at decent intervals in the ground level. So you have to go deep there. You have to go in for what we call as deep foundations, which could be in the form of piles. Again, these piles are also very important because it helps you in completing your project faster. Because digging there is a big task and you end up spending a lot of money trying to dig, build there, and again push back all the soil. আপোনাৰ ঘৰৰ ভেটিটোৰ কামত আগবঢ়াৰ সময়ত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল আপোনাৰ সামগ্ৰী অৰ্থাৎ মেটেৰিয়েলৰ বাছনি। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিল্ডিং মেটেৰিয়েল পোৱা যায়। সঠিক, দীৰ্ঘস্থায়ী আৰু ভাল কোৱালিটিৰ মেটেৰিয়েল বাছি ল'ব জানিলেহে ভৱিষ্যতে আপোনাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত দেখা দিব পৰা সমস্যাসমূহৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰিব। In terms of choice of materials, there are a lot of sustainable materials which can be used. These days, you have a lot of additives to concrete which tend to sort of reduce the amount of cement being mixed. You've got fly ash, you've got plastics being mixed, you've got biomixes being mixed with concrete to reduce the carcinogenic effect of concrete on soil. So sustainable materials are definitely sort of taking the forefront when choosing how to build your foundation. Obviously, brick and stone are the oldest materials that have been traditionally used. They can be used for smaller projects where concrete is not required as a foundation. এতিয়ালৈকে আমি কথা পাতিলো আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটোৰ ভেটিৰ, তাৰ গাঁথনি সংক্ৰান্ত কাঠামোৰ আৰু সঠিক সামগ্ৰীৰ বাছনিৰ। বিৰতিৰ পিছত জানিবলৈ ল'ম ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ভিন্ন ভিন্ন ভেটিৰ আৱশ্যকতাসমূহৰ বিষয়ে। আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটোৰ ভেটি সম্বন্ধে আপুনি নিশ্চয় যথেষ্ট কথা বুজি পালে, কিন্তু তথাপিও ভাৰতৰ কিছুমান ৰাজ্যৰ ভেটিৰ আৱশ্যকতাসমূহ অন্যান্য ৰাজ্যৰ তুলনাত অলপ বেলেগ। ঘৰটোৰ ভেটি আৰু গাঁথনিৰ ওপৰত কোনো এক অঞ্চলৰ বতৰ আৰু তাৰ ভৌগোলিক স্থিতিৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰে। যেনে ধৰক ভূমিকম্প অহাৰ সম্ভাৱনা থকা অঞ্চলত
ভেটি তাক বনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু সামগ্ৰীৰ বাছনি আদি হ'ল যথেষ্ট বেলেগ ধৰণৰ আৰু এই কথাবোৰ মনত ৰখাটো হ'ল অতিকৈ লাগতিয়াল কাৰণ এইবোৰৰ প্ৰাণ নাশৰ সৈতে সম্বন্ধ আছে When it comes to earthquake sensitive zones, it's also very important to pay attention to the traditional architecture in that region. For example, say if you go to Nepal, you've got a certain traditional style of building which uses a lot of wood and a lot of stone for the traditional houses. Now, these are materials which tend to behave very well in earthquake prone areas if they are designed and used in the right manner. Well, if it is a hilly region like the Northeast or the Uttarakhand, there is a possibility of landslides, mudslides. So the architecture has to be designed in a way where it sustains these kinds of natural disasters. So one of the important ways the government controls the market and the amount of real estate that is being built in a particular city is by coming out with these development control regulations. So the government will control the amount of FSI that can be used in a particular plot. सिस्मिक जोन में जो फाउंडेशन करना पड़ता है दैट शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड इट शुड बी क्रिस क्रॉस्ड विद द प्लिंथ बीम्स. इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं. अगर आप कहीं बेड पे खड़े हो और सडनली आपने किसी ने आके आपके नीचे की बेडशीट एकदम से मूव कर ली तो आप नीचे से हिलोगे. यू विल फेल डाउन. द सेम थिंग हैपेंस इन सिस्मिक जोन. आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू विद द डायग्राम कैसे इसको क्रिस क्रॉस बीम से कनेक्ट करते हैं. These are all columns. I am just drawing it. अभी ये प्लिंथ लेवल पे ये कॉलम्स आपके आ गए हैं. इसके बाद में जैसे कॉलम का कास्टिंग कंप्लीट हो जाता है आपको इसे प्लिंथ बीम से कनेक्ट करना होता है. So I am just drawing the plinth beams and all these structures are RCC structure. ये सारा सीमेंट एंड कंक्रीट में ही बनता है. अभी मैं क्या कर रहा हूँ प्लिंथ लेवल पे ये सारे कॉलम को कनेक्ट कर रहा हूं बाय वे ऑफ प्लिंथ बीम. और ये प्लिंथ बीम जो रहते हैं एंड ये जो कॉलम्स रहते हैं वो अगर अर्थक्वेक आता है तो वो केस में एक दूसरे को अच्छी तरह से पकड़ के रखते हैं एंड दे विल नॉट अलाउ द स्ट्रक्चर टू मूव. ये देखिए मैंने इसको सारे को क्रिस क्रॉस से कनेक्ट कर दिया है. अगर अर्थक्वेक आता है तो दीज स्ट्रक्चर ऐसे करने से दे विल नॉट अलाउ द स्ट्रक्चर टू मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ क्रिस क्रॉस बीम्स एट प्लिंथ लेवल. सिस्मिक जोन में लाइटर वेट मटेरियल इज ऑल्सो एडवाइजेबल. आप इसका लाइटर वेट मटेरियल जैसे कि वुड है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीटिंग है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो बिकॉज इट कैन बी रीयूज्ड. वहां पे अगर अर्थक्वेक्स आने के बाद स्ट्रक्चर गिर जाता है तो वुड एंड जीआई शीट कैन अगेन बी इरेक्टेड. उसको खड़ा कर सकते हैं प्रॉपरली, वापस यूज कर सकते हैं. আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰটোৰ ভেটি আৰু গাঁথনি নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত এজন সাধাৰণ মানুহে কোনবিলাক কথাৰ প্ৰতি ভালদৰে মন দিব লাগে সেই কথাও আপুনি জানি লোৱাটো প্ৰয়োজন. বতৰ আৰু মাটি অনুযায়ী কথাবোৰ বহুত সলনি হৈ পৰিব পাৰে. When designing houses in earthquake prone areas, there are certain environmental requirements that you take care of. To give you an example, if you're designing your house in a very climatically wet area, you will react by using pitched roofs, sliding roofs or angled roofs to sort of drain the water out. You'll also sort of start designing your house with a lot of rainwater harvesting elements to add a sustainable angle to it because you have an abundance of rainwater. So understanding your environment is very important when you're choosing the aesthetics. For your 3 or 4 storage structure, you should keep in mind the following points. Some very important aspects in your foundation. First thing I would recommend is to check the type of soil. You should ensure that the soil has been tested by an expert. A regular calculation needs to be done regarding the bearing capacity, and you should also check the depth at which that bearing capacity is available. Generally, it is not enough to say the bearing capacity is so much, but it is very important to know at what depth the bearing capacity is available. Also, the next important point is the water table. Is your area waterlogged or is this water table quite high? Because that will differentiate the type of
foundation you need to do on your site. The water table plays a very important role. You will find that this water table would fluctuate depending upon the seasons. In the rainy seasons, it would come up to the ground level. Others, it could go down, and that affects your soil surrounding. A saturated soil would behave differently than a dry soil. So the water table and the soil below are some very important parameters you need to consider when you're building your ground plus 2 or ground plus 3 house. As a principal designer of your house, I will appoint the right structural designer who will design the skeleton of the entire building in such a way that it will withstand your earthquake prone areas and everything. When it comes to the foundation of a house, we are largely reliant on the structural engineer for the designing of the foundation. We have to submit the structural engineer's drawings to the government, and then you get an approval from the government. ঘৰ এটাৰ ভেটি বনাওঁতে খৰচ হয়তো বেছি নহ'ব পাৰে, কিন্তু এই কথা বুজি পোৱাটো আটাইতকৈ দৰকাৰী যে ঘৰ এটাৰ ভেটিটো কেৱল আপোনাৰেই নহয়, অন্য আৰু বহুতো লোকৰ ভৱিষ্যতৰ ভেটিও ই হৈ পৰে। ইমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল এটা ভেটি, আৰু সেয়ে এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ দৰকাৰী কথাটো হ'ল সস্তীয়া কোৱালিটি বাদ দি এটা মজবুত ফাউণ্ডেশ্যন গঢ়ি আপোনাৰ ঘৰৰ গুৰিটো চিৰদিনৰ বাবে সুদৃঢ় কৰি তোলাটো। এই পৰামৰ্শৰ পিছতেই আমি আজিলৈ বিদায় মাগিছো। অহাবাৰৰ শ্ব'ত কথা পাতিম আপোনাৰ ঘৰৰ ডিজাইন আৰু লেআউটৰ বিষয়ে। আপোনাৰ ঘৰ সজা সম্বন্ধীয় আমাৰ বিশেষ সিৰিজ নিউ ভোকো প্ৰেজেন্টছ ঘৰ সাজক নিজৰ আ নিউজ 18 ইনিচিয়েটিভ আজিলৈ মাত্ৰ ইমানেই।